स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। यस सर। ओके। हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। अब हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है? हेलो। यस सर, सुन रहे सर। हाँ, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है? व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स? बिकॉज सर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बताने से। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताने से कि अर्लियर टाइम में कैसे काउंट किया जाता था, तो क्या कहते हैं कि, और उससे क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट जागता है सर। वेरी गुड। For better understanding of mathematics, we should learn history of mathematics. For, for better understanding of mathematics, we should learn history of mathematics, right? Okay. हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, बेबीलोनियन, सुमेरियंस, इजिप्शियंस, ग्रीक, चाइनीज, इसके बाद इस्लामिक मैथमेटिशियंस, वहां तक डिस्कस किए। फिर इसके बाद जो 14th सेंचुरी में न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुआ है, 14th अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर 17th सेंचुरी में गैलीलियो वर्क शुरू हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स, गैलीलियो 17th सेंचुरी में। इसके बाद रेने डेस्कार्ट, फ्रेंच मैथमेटिशियन एनालिटिकल ज्योमेट्री डेवलप किया है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में वहाँ भी अल खराजी भी डेवलप किया है। इस्लामिक मैथमेटिशियंस में अल खराजी भी स्टूडेंट ऑफ अल ख्वारिज़मी, वो भी एनालिटिकल ज्योमेट्री डेवलप किया गया। यहाँ रेने डेस्कार्ट जो फ्रेंच मैथमेटिशियंस आल्सो डेवलप्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री, thereby making it is possible to plot the orbits of planets on the graph papers। तब से जो है प्लैनेट्स जो ग्राफ में ड्रा करने शुरू हुआ है। फिर इसके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन एंड जर्मन मैथमेटिशियन गिलफर्ड लेबनिज इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कैलकुलस। कैलकुलस कौन डेवलप किया है? आइजैक न्यूटन, इंग्लिश मैथमेटिशियन, एंड फ्रेंच जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है कैलकुलस के लिए, कैलकुलस डेवलप करने के लिए। आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और लेबनिज। इसके बाद फेरमैट, ब्लेसली पास्कल were responsible for the development of probability and combinatorics, change, chance। These are the Fermat and Blakeley are responsible for development of probability and combinatorics। ओके। फिर इसके बाद 18th सेंचुरी में यूलर का कंट्रीब्यूशन बहुत है। यूलर जो है मैथमेटिक्स में स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिकल टर्म्स दिया गया है, नोटेशंस, आई सिंबल दिया गया है। आई सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई सिंबल, स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर -1, एंड द सिंबल पाई जो कांस्टेंट यूज करते हैं हम सर्किल्स फाइंड आउट करने में। पाई जो है, पाई फॉर द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। जो वेरियस डिफरेंट सर्किल्स का जो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने में, और सर्किल में डायामीटर का और सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है कॉमन है, वो पाई, जो पाई 22/7 जो उसका सिंबल दिया गया है यूलर, लियोनार्ड यूलर टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म्स, नोटेशन, सिंबल्स को जो स्टैंडर्डाइज किया गया है। His contribution includes the works of area of topology, graph theory, calculus, combinatorics and complex analysis। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी में क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? टोपोलॉजी में स्पेस के बारे में सर पढ़ते हैं। स्पेस के बारे में, इसमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहता है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे ना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं हम लोग, जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्ट्रेच्ड, एनलार्ज्ड। ओके, ये हम टोपोलॉजी में पढ़ लेते हैं। इनका यूलर का कंट्रीब्यूशन जो है, यूलर का कंट्रीब्यूशन टोपोलॉजी में भी है, ग्राफ थ्योरी, कैलकुलस, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद जोसेफ लुइस लेग्रांजे, इनका नंबर थ्योरी में, आजकल नंबर थ्योरी नहीं पढ़ रहा है,
शायद आपका यूनिवर्सिटी में है नहीं, ये पता नहीं है, मगर हमारा उस्मान यूनिवर्सिटी में नंबर 3 रहते थे। हम जब मैं एमएससी मैथमेटिक्स करता था, हम नंबर 3 एक पेपर रहते थे। अब वो नंबर 3 को निकाल दिया है कुछ यूनिवर्सिटीज में। इनका जोसेफ लुइस लेग्रांज का नंबर 3 में अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कैलकुलस में कंट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में मैथमेटिक्स बिकेम मोर एंड मोर अब्स्ट्रैक्ट। 19th सेंचुरी से मैथमेटिक्स बहुत अब्स्ट्रैक्ट हो गया है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक्सपेंशन हुआ सर, मतलब बहुत वो थ्योरीज वगैरह आई, उसका फॉर्मूला है, बहुत सारे फील्ड में। which is not concrete is called abstract। abstract मतलब x y z मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स अपना लैंग्वेज हो गया है, राइट। algebra is the abstract form of mathematics, समझ रहे हैं ना। यूनिवर्सल लैंग्वेज, algebra is the universal language of mathematics। इस तरह मतलब 19th सेंचुरी में मैथमेटिक्स क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया है। फिर कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। को किसको कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स? जनरली फादर ऑफ अलजेब्रा ऑल कॉर्जिमी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ साइंस को न्यूटन कहते हैं जनरली। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज कहते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है फेमस मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, गॉस, फ्रेडरिक गॉस did revolutionary and remarkable work in the study of functions of a complex variable, geometry of surface and the study of convergence of infinite series। इसलिए इनको कहा जाता है फेमस वर्ल्ड मैथमेटिशियन। फादर ऑफ मैथमेटिशियन इज आर्किमिडीज, फादर ऑफ साइंस इज न्यूटन, मदर ऑफ मैथमेटिक्स, हु इज मदर ऑफ मैथमेटिक्स? जनरली कहा जाता है हाइपेशिया। नेक्स्ट रीमान डेवलप्ड रीमान ज्योमेट्री, रीमान इंटीग्रल थ्योरी। एबल एंड गैलियोस डेवलप्ड द ग्रुप थ्योरी। एबल गैलियोस ये दोनों मिलकर ग्रुप थ्योरी को डेवलप किया है। ग्रुप थ्योरी मतलब ग्रुप थ्योरी मीन जिसमें सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वो ग्रुप सीखते हैं, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सब है सर। यस ओके। ये दोनों लोग एबल गैलियोसो ये दो लोग जो है डेवलप किया ग्रुप थ्योरी। इसके बाद 20th सेंचुरी के बाद जो है रिसर्च करने शुरू किया गया है मैथमेटिक्स में। एक्सप्लोजन इन द एरिया ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स। 20th सेंचुरी से मैथमेटिक्स में रिसर्च शुरू हुआ। 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया। 20th सेंचुरी के बाद जो है मैथमेटिक्स में रिसर्च शुरू हो गया। मतलब इस तरह 35,000 बीसी से लेकर अब तक 20th सेंचुरी तक जो है मैथमेटिक्स कैसा डेवलप किया है, क्या क्या कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट किया गया है। बाबिलोनियन, सुमेरियन, चाइनीज, ग्रीक्स, इस्लामिक कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इंडियंस, इंग्लिश। सर एक क्वेश्चन है, फ्रेंच। सर एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या इंडियन का क्या कंट्रीब्यूट है सर? कुछ टॉपिक बता सकते हैं आप? कौन? इंडियन मैथमेटिशियन का मॉडर्न में अभी हाल में सर, कुछ दिनों में 10-20 साल, 25 साल, 40 साल में। अभी देखिए 10 साल 25 साल में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा जो मेरा टीचर था प्रोफेसर रविंद्र बोल के, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन में है। और रिंग थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन है। रिंग थ्योरी में एनसीईआरटी का डायरेक्टर रह चुके हैं, एनसीईआरटी का प्रोफेसर रविंद्र।
4-5 ईयर्स पहले जॉइंट डायरेक्टर थे एनसीईआरटी का, उनका कंट्रीब्यूशन है फील्ड थ्योरी में, उससे ज्यादा नहीं है रिसेंटली। ओके, मतलब 20th सेंचुरी से रिसर्च शुरू हुआ यहाँ। ओके, इस तरह मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड से 20th सेंचुरी तक कैसा कैसा डेवलप हुआ है मैथमेटिक्स, हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे। इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ओके, कुछ दिखा के आप लोग जो है इसमें पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स मैंने पैडलेट दिया ना, उसमें वीडियोस दिया था, कितना लोग देख चुके हैं? ये 2 वीडियोस मैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में 2 वीडियोस रखा था, कितना लोग देख चुके हैं? देखा है? हेलो, नहीं देखे हैं सर। नहीं देखे, ओके, कोई बात नहीं है। मतलब टाइम सेव करने के लिए मैं इसमें रखा था, आपको अगर फ्री टाइम है तो देख सकते हैं। देखिए, हम 2-3 दिन से हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, इस तरह डिस्कस करने के बाद आप कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं समझ रहा हूँ। वो आपको कंटेंट भी दिया गया है, 147 पेजेस का जो मटेरियल भी दिया गया है, कुछ वीडियोस भी रखा गया है, और बच्चों को अपना टाइम पे, जो खाली टाइम पे देखने के लिए बोले तो बच्चे करते नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज को जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में आपको क्लैरिटी आने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करने जा रहा हूँ। अभी मैं जो बताया मैं मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूं ये सब याद नहीं है आपको, ये सब आपको याद दिलाने के लिए मैं कुछ एक्टिविटीज करने जा रहा हूं, देख लीजिए। राइट, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है। अभी जस्ट नाउ पूछा गया है, सर रिसेंटली क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और सर ये वो है। अब बताया, आलकार्जमी के बारे में बताया, गास के बारे में बताया, न्यूटन के बारे में बताया, गैलीलियो के बारे में बताया। हाँ, बहुत बताया, मुझे याद नहीं है। आपको पूरा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को जो याद करने के लिए मेरे पास कुछ एक्टिविटीज है, वो करने के बाद ये सब थोड़ा सा डिस्कस किया गया, अब फेमिलियर हो गया, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स फेमिलियर हो गया। फेमिलियर होने के बाद अब जो एक्टिविटीज करने जा रहा है उससे आपको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एक जो है एक क्लैरिटी मिल जाएगा। राइट, ओके, आगे बढ़ सकता हूं मैं? यस सर। ओके, देखिए ये मैथिगन वेबसाइट में ये टाइमलाइन ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी मैंने 4 पेजेस में जो 147 पेजेस को समराइज करके लिखा है, यहाँ आपको जो है ना विजुअलाइज करके दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स हिस्ट्री टाइमलाइन, यहाँ मैंने बताया आपको 35 सेंचुरीज, 35,000 बीसी में बेबीलोनियंस डिस्कवर्ड, जो मैंने बताया, मगर यहाँ दिया गया है 20,000 बीसी। 20,000 बीसी में स्टोन एज कहा जाता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपने 35,000 बीसी से शुरू हुआ है, मगर आप यहाँ दिखा रहे 20,000 बीसी। ये जो है ना वर्ल्ड वाइड का मैथमेटिक्स जो टाइमलाइन दिया गया है, मगर हमारा एनसीईआरटी में जो किताब में पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में जो डेट दिया गया है, बेबीलोनियंस फिबुला जो फाइंड आउट किया है, रॉड्स में बोन्स जो नोचेस 29 डिस्टिंक्ट नोचेस जो है किताब में लिखा हुआ है 35,000 बीसी में। ये भी 20,000 बीसी के पहले 35,000। देखिए, मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ। इजांगो बोन, द इजांगो बोन इज पॉसिबली ओल्डेस्ट मैथमेटिकल artifact still existence. It was discovered in 1950, मगर इसका टाइम जो है 35,000 बीसी का, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन द सेंट्रल अफ्रीका, एंड इज नेम्ड आफ्टर द रीजन वेयर इट वाज फाउंड. इट इज द डेट्स बैक द अपर पैलेलिथिक period of human history, and it is approximately 20,000 years old. This bone is 10 centimeters long and contains a series of notches. आप देख सकते हैं यहाँ
आपका आपका जो मटेरियल मैंने सप्लाई किया उसमें भी ये फिगर है, विच मैनी साइंटिस्ट बिलीव वर यूज्ड फॉर काउंटिंग। मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स प्री हिस्टोरिक पीरियड से लगभग 35,000 बीसी से शुरू हुआ फॉर काउंटिंग पर्पस। फॉर काउंटिंग पर्पस, काउंटिंग के लिए क्या यूज करते थे? इज़ैगोबोन यूज करते थे सेंट्रल अफ्रीका में। ओके, उसमें क्या करते थे? द ग्रुपिंग ऑफ द नोचेस माइट इवन सजेस्ट सम मोर एडवांस्ड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग लाइक डेसिमल नंबर्स और प्राइम नंबर्स। इसमें अगर आप अगर समझ लेता है, इसमें डेसिमल नंबर्स प्राइम नंबर्स भी है, इसमें ग्रुप ऑफ जो लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स, ये काउंटिंग पर्पस के लिए इसमें 29 डिफरेंट लाइंस यूज किया गया है। यहां से मैथमेटिक्स शुरू किया। ओके, इसके बाद यहां भी दिया गया है, देखिए यहां क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाता है 10,000 BC ओल्डेस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन सिप्रस। मैंने बताया मैथमेटिक्स काउंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द लैंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द लैंड, लैंड को जो है डिवाइड करने के लिए मैथमेटिक्स यूज करते थे। एग्रीकल्चर लैंड को जो है ना शेप्स डिवाइड करके, मतलब हिस्सा डिवाइड करके सेटल करने के लिए यूज करते थे। अकाउंटिंग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, एक्सचेंज, एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए मैथमेटिक्स यूज करते थे। इस तरह 10,000 BC में एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब इसमें शेप्स वगैरह, शेप्स रेक्टेंगुलर शेप, सर्किल, स्क्वायर शेप, इस तरह लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नेक्स्ट 5000 BC, यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग 5000 BC में कुछ अब डिस्कस किए। 5000 BC में याद है 5000 BC में कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स क्या कंट्रीब्यूट किया गया है? कौन कंट्रीब्यूट? इजिप्शियंस पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। देखिए 10,000 BC में एग्रीकल्चर लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ 5000 आने के बाद इजिप्शियंस पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एग्रीकल्चर लैंड मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स रेक्टेंगल हो, सर्किल, स्क्वायर हो, यहाँ यूज किया गया है, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इजिप्शियंस 5000 BC में इजिप्शियंस यूज ज्योमेट्रिक फिगर्स ऑफ सर्किल्स एंड एलिप्सेस। इसके बाद 4000 BC, मगर अपने पास 4000 BC नहीं, जो हमने डिस्कस किए 3000 BC में ब्रिटेन यूज ज्योमेट्रिकल फिगर्स सर्किल्स एलिप्सेस, सर्किल्स एलिप्सेस। यहाँ देखिए Mesopotamia accounting tokens. In ancient Mesopotamia, almost 10,000 years ago, scribes and merchants started using small 3-dimensional clay objects as counters to represent certain quantities, units or goods. ये इस तरह काउंटिंग पर्पस के लिए मेसोपोटामियंस यूज करते थे 3000 BC में। इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं रिंड पॉपरस। रिंड पॉपरस किस पर्पस के लिए हम मतलब डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस किए हैं। रिंड पॉपरस किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए, बता सकते हैं? रिंड पॉपरस इजिप्शियन मैथमेटिकल टेक्स्ट, जो मैथमेटिकल मैनुअल बच्चों को दिया गया है, पहला मैथमेटिकल मैनुअल 1650 में, यहाँ 1550 लिखा है हमारा टेक्स्ट बुक में, 1650 जो एनसीईआरटी किताब है 1650 में रिंड पैपरस इजिप्शियन मैथमेटिशियन एंड इंस्ट्रक्शनल मैनुअल टू द स्टूडेंट्स इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। अर्थमेटिक की ज्योमेट्री मैथमेटिकल मैनुअल दिया गया है 1650 में। ओके, यहां देख सकते हैं द रिंड पेपरस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। इट वाज रिटन अराउंड 1550 BCE by scribe called Abacus, who is maybe earliest contributed to math in history, whose name we still know today. The papyrus is around 2 meters long
एंड काउंटिंग 84 प्रॉब्लम्स अबाउट मल्टीप्लिकेशंस। मैंने बताया इसमें मैनुअल में क्या क्या रहता था, क्या क्या रहता था, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्किंग विथ यूनिट फ्रैक्शंस, फार्मूला फॉर एरिया, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, इट आल्सो ए मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस। ये सब इसमें इस मैनुअल में रहते थे। 84 प्रॉब्लम्स 2 मीटर्स लॉन्ग एंड कंटेन्स 84 प्रॉब्लम्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन एंड ज्योमेट्री। इट वाज प्रोबेबली यूज्ड एज काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक। फर्स्ट मैनुअल बच्चों के लिए कब यूज किया गया है? यहाँ अप्रोक्सीमेटली 1550 BC। Rind Papyrus, the papyrus named after Scottish antiquarian Alexander Henry Rind। ये दिख रहा है ना? ओके, इसके बाद हम ग्रीक मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं और ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन में मैंने डिस्कस किया थेल्स, पाइथागोरस। ग्रीक के पहले जो मैथमेटिक्स है इंडक्टिव मैथमेटिक्स, ग्रीक के बाद डिडक्टिव मैथमेटिक्स। ग्रीक जो है एक माइलस्टोन है, ग्रीक्स का माइलस्टोन है, वहां से डिडक्टिव मैथमेटिक्स है। दोनों इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस हैं, दो इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस, थेल्स एंड पाइथागोरस। थेल्स देखिए, थेल्स 624 to 546 BC was a Greek mathematics and a philosopher. Thales is often recognized the first scientist in Western civilization. Rather than using religion of mythology, he tried to explain natural phenomena using scientific approach. He is also the first individual history that was a mathematical discovery named after him. Thales theorem. Thales theorem. क्या करते थे, शी शोर से जो शिप्स है उसका डिस्टेंस, पिरामिड्स का हाइट्स बताते थे। ये थेल्स इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर पाइथागोरस, मैंने बताया पाइथागोरियन जो है, पाइथागोरियन स्कूल जो मैथमेटिक्स टर्म्स पहले यूज किया, पाइथागोरियन almost 570 to 495 was a Greek philosopher and mathematician. He is the best known proving Pythagorean theorem, but made many other mathematical scientific discoveries. Pythagoras tried to explain the music in a mathematical way. ये आपका पाइथागोरियन थ्योरम देख सकते हैं आप। ओके, इसके बाद थेल्स, पाइथागोरस के बाद हम क्या डिस्कस किए हैं? अरिस्टोटल हम डिस्कस किए। अरिस्टोटल किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए? अरिस्टोटल रोट लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक लिखते थे, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक अलजेब्रा में मैथमेटिकल लॉजिक रहते हैं, मतलब एक दूसरा स्टेटमेंट से लिंक रहता है। Aristotle, philosopher ancient Greece, together with his teacher Plato, is considered father of Western philosophy. He was also the private tutor Alexander Great. Aristotle wrote about science, mathematics, philosophy, poetry, music, politics, इस तरह logic. Aristotle is the first known person to formally study logic, including its application in science and mathematics. Who wrote logic? Aristotle. ओके, ये हम डिस्कस किए। इसके बाद हम ये भी डिस्कस किया, अरिस्टोटल के बाद यूक्लिड भी डिस्कस किए। यूक्लिड किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए? यूक्लिड जो वॉल्यूम लिखा है उसको कहते हैं द एलिमेंट्स किताब लिखा है। ओके, ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इज ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ अलजेब्रा, ऑल Khwarizmi, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन बताया मैंने? आर्किमिडीज। वर्ल्ड मैथमेटिशियन कौन है? गॉस। फादर ऑफ ज्योमेट्री ग्रीक मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर। ओके, his book Elements was introduced Euclidean geometry, defines its axioms, contains many important proofs in geometry and number theory. ओके, एक आप जो है ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन,
इससे आता है हमेशा हु रोट दी बुक एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, आर्किमिडीज। ओके, नेक्स्ट हम आर्किमिडीज डिस्कस किए। आर्किमिडीज किस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस किए, बता सकते हैं आर्किमिडीज को? अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई वैल्यू दिए हैं इधर आर्किमिडीज। सर आर्किमिडीज का तो वो ज्योमेट्री में तो किया सर, हाँ? ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर। हाँ नहीं, हम लोग जो डिस्कस किए किस कॉन्टेक्स्ट में, इनका ज्योमेट्री में काम है, मगर हम लोग जब डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, आर्किमिडीज कब याद किए? आर्किमिडीज की इसलिए हम याद किए हैं जो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट किया गया आर्किमिडीज। जी ओके, जी सर। यूक्लिड दी एलिमेंट्स लिखा है, यूक्लिड। यस सर, द एलिमेंट लिखा है ना सर वो। हाँ ओके, मतलब इस तरह। इसके बाद ये सब एक्सप्लोर कीजिए, मतलब उतना टाइम नहीं है अपने पास। आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, ये सब डिस्कस करेंगे हम, जो है ना इंडियन मैथमेटिशियंस, वेस्टर्न मैथमेटिशियन जो डिस्कस करते हैं, ये लोग भी आएंगे। हाँ देखिए, इसके बाद हम ये ऑल कॉर्जमी के बारे में डिस्कस किए। ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, आर्यभट्टा, ये मैथमेटिशियन, वेस्टर्न मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियंस जब डिस्कस करते वक्त इन लोगों को देखेंगे। ऑल कॉर्जमी डिस्कस किए हम लोग, ऑल कॉर्जमी। ऑल कॉर्जमी किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए हम लोग? इस्लामिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में 1825 AD में पर्शियन मैथमेटिशियन ऑल कॉर्जमी, ए फादर ऑफ algebra, wrote on the calculations with Hindu numerals. He is the responsible for knowing the Hindu numeral numbers to the Western world. वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदू न्यूमरल नंबर्स को बताए ऑल कॉर्जमी, इसलिए इनको फादर ऑफ algebra कहा जाता है। ये पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद ऑल कॉर्जमी। All Kharazmi also worked in astronomy and geography and the word algorithm. ये भी डिस्कस, ऑल Kharazmi। नेक्स्ट ऑल कराजी भी डिस्कस किए, ऑल कराजी। ऑल कराजी किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया हम लोग? ऑल कराजी मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इंडक्शन। ए पर्शियन मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज प्रूफ बाय इंडक्शन, which allowed him to prove binomial theorem. Proof of induction यहां दिया गया है। देखिए, मतलब इस तरह इंडक्शन बाय ऑब्जर्विंग कॉन्क्रीट। देखिए, एक वन केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, इसके बाद जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्क्रीट एग्जांपल्स and reaching to the generalization is called induction. It is true for n is equal to 1, and it is true for n is equal to, and it is true for n is equal to k, and it is true for n is equal to k plus 1, and it is true for all n. That is generalization. This is called induction. ये ऑल कराजी, ये भी डिस्कस किए। एथेहम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए? sum of fourth power of natural numbers, sum of fourth power of natural numbers, 1 power 4, 2 power 4, 3 power 4, n power 4. Abel Itham derived a formula for sum of fourth power of natural numbers, ये बताए थे। फिर इसके बाद ओमर खय्यम के भी, ओमर खय्यम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए? Omar Khayyam laid foundations for analytical geometry and non-Euclidean geometry. Non-Euclidean geometry and analytical geometry. Was a Persian mathematician, astronomer, and poet. He managed to classify and solve the cubic equations and found new ways to understand Euclid parallel axiom. Khayyam is also designed for Jalali calendar, a precious solar calendar that is still used some countries. Pascal triangle.
ये इनका इनका कंट्रीब्यूशन है, उमर कायम। इस तरह टाइमलाइन इस तरह डेवलप हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ल्ड में हर एक का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम क्या डिस्कस किए, गैलीलियो गैलीलियो 17th सेंचुरी में गैलीलियो एस्ट्रोनॉमी का इनका काम है। देखिए गैलीलियो was the Italian astronomer, physicist and engineer. He used one of the first telescope to make observations of the night sky, where he discovered the four largest moons of Jupiter, the phases of Venus, sunspots, and much more. Galileo, sometimes called father of modern science, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, टेलीस्कोप से मतलब डिस्टेंस जो है ना स्काई को देखते थे ये गैलीलियो। फर्माट भी डिस्कस किए हम लोग, लेबनिज भी डिस्कस किए, न्यूटन भी डिस्कस किए, यूलर भी डिस्कस किए। यूलर स्विट्जरलैंड, स्टडीड, lived most of his life is Berlin, पर्शिया। यूलर का कंट्रीब्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस किए, यूलर का मैथमेटिकल सिंबल्स, नोटेशंस, टर्म्स इंक्लूडिंग सिंबल आई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड द सिंबल पाई, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। इस कॉन्टेक्स्ट में यूलर को याद किए। लैम्बर्ट भी डिस्कस किए, लैग्रांजेस की भी डिस्कस किए, नंबर थ्योरी में लैग्रांजेस, बर्नौली की भी डिस्कस किए, गॉस को भी डिस्कस किए। गॉस वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन गॉस, लैग्रांजेस, कैलकुलस। मतलब इस तरह आप जो है ना इसको एक्सप्लोर करके मैथिगार में आप एक्सप्लोर करके मतलब सिलेबस में हम लोग जो है हम डिस्कस किए हैं। ओके, इस तरह आप जो है मैथमेटिक्स को जो याद कर सकते हैं हिस्ट्री को। ओके, ये एक एक्टिविटी है, राइट। हेलो सर, हाँ बताइए। लेडीज में कोई नहीं है मैथमेटिशियन? लेडीज में हाँ। क्यों नहीं है। कौन है सर? नेक्स्ट हम जो है ना वेस्टर्न मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिशियन जब डिस्कस करते हैं ना उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, अभी तक नाम नहीं सुने हैं। इंडियन मैथमेटिशियन ही है ना, शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर, शकुंतला देवी। ओके, हिल्डा टाबा, राइट। इसके बाद हम जो है मैंने आप लोगों को मतलब अभी तक जो डिस्कस किए हैं एक वीडियो तौर पर हम देखेंगे। सेवन मिनट्स का। Human beings, from our earliest beginnings, have searched for solutions to basic problems. Building homes, measuring space, keeping track of seasons, and counting objects. Over 30,000 years ago, early Paleolithic people kept track of the passing seasons and the changes of weather for planting. To represent the passing of time, they carved tally marks on cave walls or slashed tallies on bones, wood, or stone. Each tally stood for one.
But this system was awkward when it came to large amounts, so symbols were eventually created that stood for groups of objects. Sumerian clay stones have been found that date to the 4th millennium BC. A small clay cone was used for 1, a clay ball was used for 10, and a large cone stood for 60. Written records from around 3300 BC show that Babylonians inscribed amounts on clay tablets with a reed. They used a nail shape for 1s and a V on its side for 10s, combining these symbols to write other numbers. For example, Babylonians wrote the number 19 as. The ancient Egyptians used objects from their everyday life as symbols. A rod stood for 1, a cattle hobble was 10, a coiled rope was 100, a lotus flower was 1,000, and so on. The number 19 was a cattle hobble and 9 rods. The early Romans created a number system that we still see today. Along with other symbols, they used an X for 10 and an I for 1. By the Middle Ages, Romans were putting the I to the right of the X for 11 and to the left for 9. So they wrote 19 as XIX. All these creative number systems show groups of objects as well as individual objects. Some of the oldest human counting systems rely on fingers and toes, so they were based on 1s, 5s, 10s, and 20s. The Zulu word for 6 means to take the thumb of the right hand, meaning that all the fingers on the left hand had been added up and the other thumb was needed. Other systems evolved from commerce. The Yoruba in Nigeria used cowrie shells as currency and developed an amazingly complex number system. It was based on 20s and on the operations of multiplication, subtraction, and addition. For example, they thought of 45 as 3 times 20 minus 10 minus 5. Knots tied in cords and strings were used for recording amounts by many cultures, like the Persians. The Incans used a more refined version called a quipu, a thick cord held horizontally from which hung knotted string. The kind of knot the Incans used, along with the length and color of the cord, represented 1s, 10s, and 100s. In today's world, almost every industrial culture uses the numerals 0 through 9. But these symbols weren't invented until the 3rd century BC in India, and it took another 800 years for the idea of 0 with place value to be constructed. This big idea dramatically changed the face of mathematics. We humans have always shared with one another. When early cultures shared their food and water or wanted to divide their land in ways that were fair and equal, fractions gradually emerged as symbols for these fair share situations. The ancient Egyptians used unit fractions. Fractions where the numerator is 1, like 1/2, 1/3, and 1/5, and would add and halve these fractions. If they wanted to divide 3 loaves of bread equally among 5 family members, they'd first divide the first and second loaves into thirds. Then they'd divide the third loaf into fifths. Finally, they'd take the remaining 1/3 from the second loaf and divide that into 5 pieces. They wrote this as 1/3, 1/5, 1/15. Today, we would represent this sharing with the fraction 3/5, 3/5 of a loaf for each person, or 3 loaves divided by 5 people. The Sumerians and early Babylonians invented a number system of fractions based on 60 that we still use 4,000 years later. Our days have 60-minute hours and 60-second minutes, and our circles encompass 360 degrees. Chinese societies used an abacus with a system based on tens, although it had no 0. An early form of decimal fractions came from the abacus. For example, 3/5 would be 6 out of 10 on an abacus. The Chinese lovingly named the numerator the sun and the denominator the mother. It wasn't until the 12th century that common fractions, with the bar notation that we use today, were invented. Even then, these fractions weren't widely used until the Renaissance period, only 500 years ago. Throughout history, every culture around the globe has created inventive ways to calculate. To solve a problem, say 12 times 15, early Russian peasants used a system of doubling and halving. When an odd number, halved, resulted in a fraction, they rounded down. Then they added the factors associated with the odd multipliers. Ancient Egyptians relied on a doubling procedure until they produced enough groups. Then they added these groups to find the answer.
Across Europe and Asia during the Middle Ages, the abacus was the handheld calculator of its day, but only very few people knew how to use it, usually wealthy merchants and moneylenders. By simply moving beads that each had place value, an abacus was a highly efficient way to compute. Then, the great Arab mathematician Al-Khwarizmi introduced the Hindu-Arabic numerals 0 through 9 into North America and Europe and created new procedures for computation. These algorithms could be written onto paper. Over the centuries, learning the algorithms became the hallmark of an education, as students were taught to compute long columns of figures, borrow and carry, and do long division efficiently and reliably. They could now keep records of these procedures and check results. Today, complex calculations are done with a handheld calculator. This means students need the ability to check the reasonableness of the answer and to have a rich repertoire of mental math strategies to do that. Most simpler computations, like 12 times 15, can be solved mentally using a variety of strategies. As we journey through the rich and vibrant history of mathematics, we can see how ideas and creations grew out of our very human need to solve the problems in our everyday lives. Through time, the mathematical explorations of men and women from around the globe have given us fascinating lenses that help us to mathematically view and make sense of our worlds. हेलो जी सर। समझ में आया ना? यस सर, यस सर। किस तरह मतलब मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है काउंटिंग से लेकर जो है ना स्पेसेस को, जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, फिर काउंटिंग में दिक्कत होता है, फिर जो है ना 10 के लिए एक नंबर, 1 के लिए एक नंबर, इस तरह सिंबल्स, उस तरह फिर फ्रैक्शंस, इस तरह मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है। रिसेंटली जो कैलकुलेटर तक कहाँ से शुरू करके फिर ह्यूमन नीड्स के लिए मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है बोल के 7 मिनट वीडियो में अच्छा तरह दिखाया है, राइट? ओके, फिर इसके बाद अब तक जो हम लोग डिस्कस किए पूरा कवर करते हुए एक वीडियो है। If you find maths hard, you're in good company, because some of the greatest mathematicians of the past struggled with the maths that you're supposed to know. Until a few hundred years ago, maths, like reading and writing, was the preserve of the ruling classes, priests and scribes, merchants and scholars. But now we're all expected to use it. So we're here at the Science Museum stores in London to see where some of our maths came from. Think of a number, any number, but where did they come from and what do they mean? Our number system uses just 10 digits, 1 to 9 and 0. And depend. आवाज क्लियर है ना? यस सर। हेलो, क्लियर है ना आवाज? आवाज क्लियर आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा सर कट कट के आ रहा है, मतलब पिक्चर में ये नहीं कर रहा है। ओके, इसका इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं, आप देख लीजिए, समझ में आता है। ऐसा नहीं है, आप दिमाग में वो नेगेटिव जो है ना समझ में नहीं, आप निकाल दीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आता है। पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो के साथ दिखाते हैं। If you find maths hard, you're in good company, because some of the greatest mathematicians of the past struggled with the maths that you're supposed to know. Until a few hundred years ago, maths, like reading and writing, was the preserve of the ruling classes, priests and scribes, merchants and scholars. But now we're all expected to use it. So we're here at the Science Museum stores in London to see where some of our maths came from. Think of a number, any number, but where did they come from and what do they mean? Our number system uses just 10 digits, 1 to 9 and 0.
And depending where a digit is in a number, it has a different value. So this is 2. This 2 means 2 tens. And this 2 means 2 hundreds, and so on. Are hundreds, tens, and units. And if there aren't any digits in a place, we put a 0. But it wasn't always like that. In earliest times, numbers were used to count things, bushels of wheat, sheep, and they were written as simple tally marks. But it's difficult to count a lot of tally marks. So the next idea was to bundle them into groups and count the groups. Around 5,000 years ago, the ancient Egyptians used this grouping idea in their number system. They used a series of hieroglyphic pictures, and each picture was worth 10 times more than the one before it. Number 1 was a straight line. 10 straight lines made one heel bone. 10 heel bones made one coil of rope, and so on, up to the god Head, who was worth 1 million. The Egyptians made any number by using the right number of symbols. So 2084 would be 2 water lilies, 8 heel bones, and 4 straight lines. At the same time, the Babylonians, who lived where Iraq is now, had a different approach. They used just 2 different kinds of arrow strokes to make all their numbers. Here's a Babylonian clay tablet at the Science Museum collection with a mathematical problem about right-angled triangles. It's written on clay because paper hadn't been invented then. These marks were pressed into wet clay using a wedge-shaped stylus and then allowed to dry. The Babylonians counted in 60s, so to write their numbers, they'd start with lots of marks for 1 until they reached 9. Then turn the stylus on its side to make a 10. Then they'd use combinations of 1s and 10s to make numbers up to 59. The Babylonians' breakthrough was what they did next. To make 60, they didn't use a new symbol like the Egyptians did, but moved along one space and used the same mark as they'd used for 1. Then on they went, using the same set of symbols all over again and again. If there was a position with no number in it, the Babylonians left a gap, which could be a bit confusing. So they eventually hit on the idea of putting a little mark in the gap to show there's nothing there, which is the first sign of something like R0. Here's our number 2084 in Babylonian script, which they'd write as 34 60s and 44 units. These Babylonian numbers are the first sign of a number system where the same symbols can have a different value depending where in the number they are. A place value. In China in the 4th century BC, the ancient Chinese used rods arranged on a counting board. They made different combinations of rods for the numbers 1 to 9. And once they got to 10, they moved along one place and used the same combinations of rods again, turned sideways to avoid confusion, and so on, with each position worth 10 times more than the one before it. So the Chinese number system was based on 10, like ours. Here's our 2084 in Chinese numbers, with a space where we put the 0. By about 200 AD, the Chinese had developed the abacus to do calculations more quickly, with beads on wires to make the numbers. This abacus in the Science Museum has 5 single beads and 1 bead worth 5 in each row, with each row worth 10 times more than the one before it. So this is 2084. But what was happening in Europe at this time? The Roman Empire covered most parts of Europe and parts of Africa and Asia from around 30 BC to 450 AD. The Romans used 7 capital letters for their numbers, which were easy to carve into stone or scratch in a wax tablet. Paper still hadn't been invented yet. These letters went up in multiples of 5 or 10, and the Romans made all their numbers from them. So here's our 2084. This wasn't a place value system like the Chinese or Babylonians, because it used different symbols for each value, more like the ancient Egyptians. The Romans had no 0,
big numbers were really awkward, and multiplication and division was very difficult. Despite all these drawbacks, Roman numbers were still used in Europe by church and state officials for centuries after the Roman Empire had collapsed. But the number system we use now is nothing like the Roman system. So where did it come from? It was in India from around the 4th century AD that written numbers started to appear that we'd recognise. They used different symbols for the numbers 1 to 9 and moved them along one place for each multiple of 10. And instead of leaving a gap where there were no numbers, the Hindu mathematicians used a little dot or a circle, the first sign of a proper zero. News of the new numbers soon spread to Europe. Early in the 13th century, the famous Italian mathematician Fibonacci wrote about them in his book of calculations. The 9 digits of the Hindus, the knowledge of the art of which very much appealed to me. And he explained how, with just these 9 figures and the sign 0, any number may be written. But despite Fibonacci's enthusiasm for the new numbers, the authorities in Europe preferred to stick with the old Roman numbers they'd been using for 1,000 years before. This held up mathematical progress in Europe for years, and it wasn't until the 16th century that the Hindu Arabic numbers we use today finally became established. In his book, Fibonacci also wrote about how to work with the new Hindu numbers. This shows how to multiply large numbers using the Hindu grid system. This is how it works. To multiply 56 by 28, you draw up the grid and fill it out by multiplying each pair of digits in turn, like this. And then add the results in each diagonal. So our answer is 1568. By the end of the 16th century, this was a standard method of doing multiplication. In the early 17th century, the famous Scottish mathematician John Napier invented a simple calculator to help with this grid multiplication. They were called Napier's bones, and here's a set in the Science Museum's collection. You arrange the bones to make the number you want to multiply, say 2084. And to multiply by, say, 4, you read the results across the 4th row, adding the digits in each diagonal to get 8336. From then on, more devices were produced to help do calculations quickly, such as mathematical tables and slide rules, and mechanical calculator machines that use gears and cogs to add, subtract, multiply, and divide. Multiplication is repeated addition. So to multiply 56 by 28, you turn the handle 8 times for the units, and then move the carriage along and turn it twice with the tens. By the 20th century, electronic calculators made working with numbers even easier. Now we can get an instant answer to the most complicated problem, but it will only be the right answer if we put in the right numbers and press the right buttons. But whilst modern electronic calculators make working with numbers easy, they also make it easy to forget how our number system works and how wonderful it is. If you find negative numbers difficult to understand, you're in good company. As recently as 1759, a famous British mathematician wrote that negative numbers darken the whole doctrines of the equations and make dark of the things which are, in their nature, excessively obvious and simple. And he went on to conclude that negative numbers were nonsensical. You can understand him saying that because, after all, numbers were used to count real things, and mathematics was about calculating real quantities. So how can there be a quantity that's less than nothing? It's not surprising negative numbers posed a problem. In ancient times, the Greeks had no negative numbers because their maths was based on geometry, in which numbers represented real lengths, areas, or volumes. Around 250 AD, the Greek mathematician Diophantus wrote a famous book about equations and looked at what we'd write as 4x plus 20 equals 4.
Now, the Greeks didn't write equations like we do, but would say something like, how many things, when multiplied by 4 and added to 20, is equal to 4? But Diophantus pointed out that 4 is smaller than 20, so that's absurd. And so it would be to the Greeks. Our solution of x equals negative 4 would be completely meaningless. In India, in the 7th century, the famous Hindu mathematician Brahmagupta explained negative quantities in terms of debts, and he came up with some rules for doing arithmetic with them. A fortune subtracted from 0 is a debt. A debt subtracted from 0 is a fortune. And a debt times a debt gives a fortune. We'd go along with that now, but mathematicians remained very suspicious of negative numbers for centuries to come. Even in 16th century Europe, resistance to negative numbers continued because most maths was still based on practical activities, such as science, commerce, or warfare, in which negative numbers had no meaning. Mathematicians still called them absurd and rejected negative solutions of equations as fictitious or false roots. It wasn't until the 17th century that an English mathematician, John Wallis, came up with a novel idea of explaining negative numbers by showing where they come on a number line. In his treatise on algebra, Wallis gives the example of a man having advanced 5 yards, thence retreat 8 yards, and it be then asked how much is he now advanced. I say because positive 5 subtract positive 8 equals negative 3, that he is advanced by 3 yards less than nothing, which is exactly how we think of numbers on a number line today. And now negative numbers are on the school syllabus, so you too can relive, but hopefully avoid, the difficulties that plagued the famous mathematicians of the past. For as long as people have engaged in trade or built things, they needed to measure things, and much early mathematics was based on calculations that used these measures and recorded the result. Early units of measurements were based on parts of the human body, such as inches, spans, cubits, feet, and yards. Others were based on human activities, such as bushels, stones, acres, pints, and miles. But these human measures varied from person to person, and those based on traditional activities varied from place to place. Measures needed to be standardized across the country, and accurate versions kept in a safe place for reference. Here in the Science Museum collection is a set of 500-year-old standard measuring jugs from Tudor times. That's a gill, and that's a pint. This is a standard yard, and this is a standard 1 pound weight. As trade between different countries increased, universal standards of measurement were needed. From the 17th century onwards, Britain had an empire that stretched around the world, so those countries used the British imperial measures of feet and inches, pounds and ounces, gallons and pints. But with 12 inches in a foot, 16 ounces in a pound, and 8 pints in a gallon, and the rest, these imperial units were quite awkward to do calculations with. But across the English Channel, something exciting was happening. In 1789, there was a revolution in France that overthrew their government, executed their king, and took over power from the ruling classes, cutting off many heads in the process. The new revolutionary government wanted to change every aspect of French life, and one of those changes was to introduce a completely new and rational system of measurement, which would be based on something far more scientific than the length of someone's foot. So the French Academy of Sciences came up with the idea of a measure based on a 10 millionth part of the length of the arc around the Earth at sea level from the equator to the North Pole. That would be their new unit of length, and they would call it a meter, from the Greek word for measure. It took French surveyors and mathematicians several years to work out the exact length of this new meter, and when they had, an accurate meter bar was made in platinum and kept in the French National Archive as a permanent reference. Here's a copy of that standard meter bar in the Science Museum collection,
made of brass. The French Academy came up with more units based on their new meter. The unit of volume would be a cube of size exactly 1/10 of a meter, which would be 1 litre. And the mass of 1 litre of pure water would be 1 kilogram. What's more, all these new French metric units would have larger and smaller versions based, logically, on multiples of 10 to make it easier to convert between them. They were all given logical names. So 1 kilometre is 1,000 metres, 1 kilogram contains 1,000 of these tiny grams. There are 100 smaller centimetres in a metre, and 10 even smaller millimetres in a centimetre. In the revolutionary further, the French went even further, and in 1793 they proposed a system of metric time based on a 10-day week and a 10-hour day. But would this new national system catch on? Well, not surprisingly, it wasn't too popular with the people of France. The new decimal calendar and the 10-hour clock was forgotten about after a few years, but the other metric measurements eventually began to catch on in Europe. It was only when Britain joined the European community in the 1970s that our old imperial feet and inches, pounds and ounces started to be replaced by European meters, litres and grams, though we still hang on to our miles and our pints. So where did algebra come from, with all those equations with their x's and y's? In fact, we didn't have x's and y's until about 300 years ago, but solving problems with unknown quantities has been around for thousands of years. In ancient times, what we call equations were word problems involving quantities such as length, weight, or money. There's a famous Egyptian mathematical papyrus from about 1650 BC called the Rind Papyrus, and in it there's an example of an equation. It says, if a quantity plus a quarter of it equals 15, what is the quantity? We could write this problem as an equation. A quantity x plus a quarter of it, 1/4 x, equals 15, and then work our way through it to get x equals 12. The Egyptians had a different method. They'd guess. So let's guess that the unknown quantity is, say, 4. Plus a quarter of it, that's 1, making 5 altogether. That's 3 times too small, so let's make the unknown quantity 3 times bigger. That's 12, and try again. 12 plus a quarter of 12, that's another 3, equals 15. Correct. The trail takes us next to Persia, that's present-day Iran. The father of real algebra is the 9th century Persian mathematician Al-Khwarizmi. He wrote a book about solving problems with unknowns, and it was called the Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. The Arabic word for the completion is algebra, which is where we get the word algebra. And a lot of algebra is still about completing and balancing the equations. In his book, Al-Khwarizmi was the first mathematician to set out some standard methods for finding an unknown quantity in an equation. He gave the example of what we'd write as x squared equals 40x minus 4x squared. Al-Khwarizmi explained how to get all the similar terms together, in this case by adding 4x squared to both sides of the equation, and how to simplify by adding, subtracting, or dividing by the same quantity on each side of the equation to keep it in balance. In this case, dividing each side by 5x gives the answer x equals 8. Al-Khwarizmi's method is exactly the way we simplify and solve equations today. So, in this book, written over 1,000 years ago, Al-Khwarizmi laid out all of the basic principles of solving equations that we use today. In the years that followed, Al-Khwarizmi's algebra came to Europe, but mathematicians still worked in words, like this problem from the 13th century Italian mathematician Fibonacci. The cube and 7 things less 5 squares is equal to the root of 6 more than the thing.
with the thing being the unknown quantity he's looking for. Over time, mathematicians developed shorthand ways of writing out these problems. This is how Fibonacci's Q problem might have been written 200 years later, with M for minus and P for plus, a dotted line for equals, and CO, short for cosa, Italian for the unknown. But with each mathematician using their own shorthand, these equations weren't easy to understand. It wasn't until the 17th century when French mathematician Descartes came up with the idea of using letters from the end of the alphabet for unknown quantities that we finally got our familiar X, Y, and Z. Now that these symbols have become standard, algebra is a universal language of mathematics which can be shared around the world and everybody can understand it. Well, almost everybody. Maths developed in Europe based on ideas from India and the Arab world, but long before that, from around 600 BC, the ancient Greeks had a mathematics of their own. The ancient Greeks had a clumsy and confusing system of numbers which used all the letters of their alphabet and no zero, so they found calculations hard to do. The Greeks preferred to think of mathematics in terms of lengths, areas, volumes, and ratios, and we discuss it in words rather than write it down. They call their mathematics geometry, earth measure, and most of the geometry we do today comes from the ancient Greeks. Like many civilizations before them, the Greeks knew the importance of maths for trade, building, and navigation. But to them, maths was really a philosophy, a way of thinking, which was important to study in its own right. It wasn't enough for the Greeks to know that something was true. They wanted to know why it was true, and if it was always true. They wanted to prove things, and it's this idea of proof that was one of the most important mathematical ideas we got from the Greeks. One Greek mathematician, whose name we all know, is Pythagoras, who lived in the 5th century BC. We know about Pythagoras because of the famous theorem named after him about right-angled triangles. It says that the square on the side opposite the right angle equals the sum of the squares on the sides containing the right angle. Today, we write this as a squared plus b squared equals c squared. But the Greeks used actual words to describe actual squares sitting on the side of an actual right-angled triangle. Pythagoras wasn't the first to appreciate this special property of right-angled triangles. The ancient Egyptians used rope with knots in it, or wooden set squares with side lengths such as 3, 4, 5, or 5, 12, 13, which they knew from experience would give them a right angle. And this Babylonian clay tablet has a diagram of some right-angled triangles. But it was Pythagoras and his followers who proved that this theorem was true for any right-angled triangle. He considered 4 right-angled triangles that make a square and contain another square, and described how to move them about in various ways to prove it. There have been hundreds of other proofs since, but Pythagoras' theorem is still one of the most important, useful, and elegant in all mathematics. Another well-known Greek mathematician is Euclid. Around 300 years BC, he wrote, probably with others who worked with him, a remarkable series of 13 maths books called the Elements. They were written on papyrus scrolls, so there's nothing left of them. But Euclid's work has been copied and translated from one language to another, right up to the present day. Here's an English translation in 3 volumes. And here it is on the internet with interactive diagrams. There have been mathematics books before, but Euclid had a unique approach. He began with a few agreed definitions, like the ends of a line are called points, and some basic assumptions such as things which equal the same thing also equal one another, and then used them as the starting point for his proofs. In the Elements, Euclid covered all the mathematics that was known at the time, the fundamentals of geometry, the properties of triangles, circles, and 3D shapes, ratio, and proportion.
He started with geometrical constructions that can be done with a straight edge and a pair of compasses. And here's the first one. Book 1, Proposition 1, how to construct an equilateral triangle. Something we still do exactly as Euclid described. And when you're doing circle theorems and you notice that the angle at the circumference is always the same, you can turn to Euclid's book 3, Proposition 21, and here it is. In a circle, the angles in the same segment equal one another, which he proved 24 centuries ago. In his Elements, Euclid's whole idea was to start from something simple, agreed and known, and then build on it logically step by step to prove something far more complicated. Thanks to Euclid, the idea of rigorous mathematical proof based on logical thinking was born, which is still the basis of modern mathematics. हेलो यस सर। हाँ Yes, sir. समझ में आया ना? हाँ यस सर। सर देखिए इसको फिर से देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना, आप यहाँ देख लीजिए। आप ये इसका ये कॉपी है ना आपका, ये लिंक यस सर, यस सर। पैडलेट में लिंक ओपन करके, मैं समझा था आप लोग देख चुके हैं। ओके, हम जो थ्योरेटिकल पार्ट हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स 3 दिन से डिस्कस करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूँ आप लोग समझ लिया होगा अच्छा यस तरह। सर। जो भी रिंड पापरस हो, यूक्लिड हो, ऑल कार्जिमी हो, क्ले स्लेट हो, विजुअलाइज करके दिखाया ना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 5-10 मिनट्स ले लेते हैं। आज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को कंक्लूड करेंगे, क्लोज करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में एक एक्टिविटी अब तक जो आपका जो नॉलेज में है, इस एक्टिविटी से हम थोड़ा सा फिर एक बार याद करेंगे। ओके, देखिए ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये भी आप प्रैक्टिस किया होगा नहीं? यस सर प्रैक्टिस किए थे सर, वो समझ में नहीं आ रहा है बचपन में। हाँ देखिए ये क्रॉसवर्ड है, ये देखिए ये आपका 1 नंबर में क्लिक करें तो इसका क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए। हाँ 1 में ये डाउन है, डाउन फिल करना। हु यूज्ड ज्योमेट्री टू फाइंड, हु यूज्ड, मैं आपका नाम से बुलाता हूँ, आपका नाम वो ही बताना है, आपका नाम बुलाता हूँ मैं, वही बताना है क्वेश्चन का। ओके, देख लीजिए। Who used geometry to find the heights of pyramids and also distance of ships from seashore? कौन यूज करता था हाइट्स ऑफ पिरामिड्स एंड शिप्स डिस्टेंस, सी शोर से शिप्स का डिस्टेंस? मैं मुजफ्फर साहब आप बता सकते हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं सर? ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु यूज ज्योमेट्री टू, हाँ नहीं सुनाई नहीं दे रहा सर। नहीं देखिए ये क्वेश्चन जो है, हु यूज ज्योमेट्री टू फाइंड द हाइट्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड का हाइट पता करने में सी शोर से शिप्स का डिस्टेंस, डिस्टेंस पता करने में कौन यूज करता था? यूक्लिड और पाइथागोरस, वो पाइथागोरस। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको पता नहीं होता, हिंट करना, सी आया ना यहाँ, आप लिखना है। देखिए आपका माइक म्यूट कीजिए, टेल्स, एंटर, टेल्स आ गए ना। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्लिक करना है। फोर्थ क्या आया? हु इज द अदर वन हु गैलीलियो इज डेवलप ग्रुप थ्योरी? गैलीलियो के साथ जो है ग्रुप थ्योरी डेवलप किया कौन है? एबल, यूलर सर? है नहीं यूलर नहीं, एबल ABLE,
गैलीलियो के ग्रुप थ्योरी डेवलप किया है एबल। एबल। हाँ, यहाँ टाइप करना है एबल। देखिए एबल, एंटर, एबल, इस तरह फिल करके जाना। सेकंड क्वेश्चन अक्रॉस देखते हैं। इजिप्शियन मैथमेटिकल टेक्स्ट इज यूज्ड एन इंस्ट्रक्शनल मैनुअल टू द स्टूडेंट्स इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। इजिप्शियन मैथमेटिकल टेक्स्ट, अगर चाहिए तो आप हिंट कर सकते हैं। आर, रिंड पॉपरस, रिंड पॉपरस, RHIND रिंड कॉपर्स। PAPYRUS, रिंड पॉपरस, ये आ गया। और थर्ड डाउन में हु कॉइन्ड द वर्ड मैथमेटिक्स, ये बता सकते हैं आप लोग। हु कॉइन्ड द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टर्म कौन कॉइन किया? हेलो, यस सर। मैथमेटिक्स टर्म को कौन बताया? हु कॉइन्ड द वर्ड मैथमेटिक्स? पाइथागोरियन। जी सर, पाइथागोरियन। पाइथागोरियन का टाइप करना है यहाँ। पाइथागोरियन। पाइथागोरियन। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, हु यूज क्ले स्लेट्स? क्ले स्लेट्स कौन यूज किया गया है? अगर आपको पता नहीं हो तो हिंट भी देख सकते हैं। क्ले स्लेट्स कौन यूज किया गया है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। Mesopotamians. Sir, seventh, a French mathematician who developed analytical geometry. Analytical geometry, फ्रेंच मैथमेटिशियन कौन है? अगर चाहिए तो हिंट देख सकते हैं। आर, हेलो, है लाइन पे है आप लोग? यस 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 सर, यस। रेने डेस्कार्टस, रेने डेस्कार्टस। इस तरह फिल करना है आप लोग। ओके, पूरा हम जो डिस्कस किए इस क्रॉसवर्ड से, इस सर ये गूगल क्लासरूम पे है? गूगल क्लासरूम पे है ये क्या? क्लासरूम में है, क्लासरूम में है। तो सर वहाँ सर ये नहीं आ रहा है, हिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, ये सिस्टम में डाउनलोड करके HTML से ओपन करना है। जैसा मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए, ये ओपन नहीं होगा। HTML देखिए, यहाँ HTML वाला ओपन होगा। सर ये मोबाइल में नहीं होगा? मोबाइल में नहीं होगा। HTML डॉक्यूमेंट से ओपन होगा। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, ये पूरा आंसर्स देखिए, आंसर्स फिलअप किया गया है यहाँ। हेल्स, एबल, रिंड पापरस, पाइथागोरस, मेसोपोटामिया, ग्रीक्स, लेग्रांजेस, आइजैक न्यूटन, नासिर बुल तुसी, अरिस्टोटल, लेबनिज, यूलर, यूक्लिड, हिल्बर्ट, बाबिलोनियन, रीमान, कॉर्जमी, अल-खराजी, चाइनीस, आर्किमिडीज, रेने डिस्कार्टस, तेल्स, एबल, मेसोपोटामिया, इस तरह गास। समझ रहे हैं ना? जी सर। हेलो, जी सर। एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, सर, ये देख लीजिए, और 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। 35,000 BC में, 35,000 BC में क्या बताया मैंने? देखिए यहाँ पर 35,000 BC में Babylon's Fibula discovered 29 distinct notches। 5,000 BC में
इजिप्शियंस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकल 3000 BC में ब्रिटेन यूज्ड, 2500 BC में Babylonians used written forms, 1650 BC में Rind Papyrus, deductive reasoning Greeks 624 546 624 to 546 624 to 546 Thales 582 300 BC चेक करना 81%। तो इस तरह कहाँ गलती हुआ ये दिखाते हैं, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, राइट। हेलो हेलो यस सर। इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा एक क्लैरिटी मिल जाएगा मैथमेटिक्स में। जी सर। ओके राइट, आप कुछ कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सर क्लास छोड़ सकते हैं ना सर? हाँ छोड़ सकते हैं सर, बोल तो दिए हैं। हाँ वही ना सर, कहाँ कुछ बोले नहीं। नहीं छोड़ेंगे बोल नहीं, आज दिए हैं। रहेंगे। कमलेश भाई हाँ बोलो। हो गया खत्म क्लास। हाँ ऑफलाइन क्लास में हो गई। कितना मजा आता है भाई? क्या? हेलो, ऑफलाइन रहता तो कितना मजा आता कॉलेज में। हाँ हाँ अच्छा तो दुआ है कि कीजिए। ऑनलाइन ले रहा है, घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं भाई। अरे भाई उसमें मजा नहीं है ना, ऑफलाइन में मजा आता, ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेट रहते। सब क्विट कर दिया क्या? हाँ, सब हाँ कुछ कर दिया, 3 ही आदमी बचे हुए हैं। सर सुन रहे होंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड हो नहीं, रहा सब है। क्विट कर दिए हैं। नहीं नहीं क्विट कर दिए, वो भी छोड़ दिए। रिकॉर्ड सो रिकॉर्ड हो देखिए। रहा है। हाँ ऑफलाइन होता तो ज्यादा अच्छा होता, पढ़ने घर पे आदमी पढ़ नहीं ना पाता है, सो बात है। मोबाइल में ऑफलाइन में फर्क होता है ना। पढ़ नहीं पाता है। ठीक है हम बात करते हैं आरिफ तुमसे जरा अब। चलिए ठीक है। ठीक।